With utmost respect, we warmly and wholeheartedly welcome you, Dr. A.C. Tiwari sir. We look forward to learning from your expertise once again today. अच्छा ठीक है नहीं हेलो हेलो ये यूज हेलो यस हाँ मैं ऑन कर लेता हूँ हेलो यस गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी The topic today is a little bit different from the mainstream topics. It is a combination of mechanical engineering along with the architectural engineering and little bit of the civil along with the energy concept of present time. So now we take up the first slide to take the idea of the on hai. The passive solar design refers to the use of the sun energy for the heating, cooling, and living space by exposure of the sun. Now, this is an effort to bring the whole concept more close to the nature. मेरा फोन है अच्छा है अच्छा किसका बोल दो उनको फिर सर लेक्चर दे रहे हैं बोल दिया करो सर लेक्चर में है Passive solar design refers to the use of the sun's energy for the heating and cooling of living spaces by exposure to sun. Now, this is a science, passive solar architecture. It's a science of using the solar energy for that is a sustainable energy for the purpose of the cooling, heating of the building, and also for the proper ventilation. Three things are there. So with the help of the nature, you are doing it all. So this is the concept which is very upcoming to make the design of the building in such a way as to use the maximum nature's help, maximum of the nature's help, as much as possible the nature's help. So that is the concept here. The term solar architecture refers to an approach of building design that is sensitive to nature and takes advantage of the climate condition to achieve human comfort rather than depending upon the artificial energy that is the both costly and environmental damaging. Most importantly, artificial energy is environmental damaging. So we believe in the sustainable part of the energies. So this is the sun, using sun and the air concept, ventilation proper is the concept of sustainability. So unlike the conventional design approach that treats the climate as an enemy, conventional design approach is where the climate is used as enemy. This is very important. How we use the conventional design as a climate as enemy? We cut the trees to create some architecture. We create the concrete jungles, and that is all the environmental enemy. So we do things in the solar passive architecture when the environment is used as a friend. Let us see more about this, how it is done and how the things are done. It involves the use of solar collectors. अच्छा एक्टिव सोलर आर्किटेक्चर पहले पैसिव के समझने के लिए हम पहले एक्टिव सोलर आर्किटेक्चर समझते हैं कि व्हाट इज एक्टिव सोलर आर्किटेक्चर. Active solar architecture involves the use of solar collectors and renewable energy sources like biomass to support the features. We use the solar collectors, the heat and the electricity with the help of the solar collectors, and we use that. So in this case here, the solar collectors are not used. Active solar system are the solar panel for heat collection and electric means to transport it. Those collectors are there for collecting the heat and the solar photovoltaic effects to generate the electricity. So this is the active solar option. Now in passive solar option, this is called passive.
design because unlike active solar heating system, it does not involve the use of mechanical and electrical devices. It is not using the mechanical and electrical devices. It relies on the design or architecture of the building itself to ensure the climate control by way of natural thermal conduction, convection, and radiation. We use these three modes of heat transfer for the heating and cooling of the building, heating in case of the winter and cooling in case of the summer, and proper proper breeze of the air in the building during all the weather. The use of the solar passive means the natural cross ventilation, sufficient daylighting. These are the components of solar passive architecture: natural cross ventilation, sufficient daylighting, proper insulation, use of adequate shading devices coupled with auxiliary energy system, and they are renewable and environmental friendly, can considerably bring down the cost as well as the energy needs of the building. So these are the things which are there. Now this is continued. When sunlight strikes a building, the building materials can reflect, transmit, or absorb solar radiation. Additionally, the heat produced by the sun causes air movement that is inevitable in design spaces. Now, how the heat causing the sun can create this movement of the air? Very simple. The air, if those portions which are exposed to sun will be more hot, and the flow will take place hot. Hot means the density is less, volume is more. So the flow of the air takes place from the high density, that is the less volume, to the more volume and the less density. From the density gradient, from the cooler to the hotter space, the convection currents are created, and temperature gradient, it rotates, and you can create some power so out of that. So ये थर्मल चिमनी के ऊपर एक और फोटोग्राफ है यहाँ पे, सी ये मैं एक्सप्लेन करने की जो सेम है वही यहाँ पे they have given the chimney and the flow of the air is shown here from this to this thing. The flow of the air is shown. Same photograph with different this thing. Now the next slide is the daylighting. The daylighting, I told you the illumination and the ventilation are also part of this. When properly designed and effectively integrated with the electric lighting system, the daylighting can offer significant energy saving by offsetting a portion of the electrical lighting load. ये तो है कि हम सूरज की रोशनी को हम यूज करें. जैसे हमने क्लासरूम में we have not used curtains. विंडो से सीधी लाइट आती है. And I tell a student not to you're getting directly good sunlight. It will be spoiled if you unnecessarily use the electricity. That's why it is very much in trend. बहुत trend में है. सारे building designs हम लोग energy efficient. बिजली का बिल अलग कट जाएगा आपका. A related benefit in the reduction the cooling capacity and use of lowering the significant component of internal gain in addition to the. इससे light कम करेंगे तो gain भी electric gain कम होगा, हमारा heating load कम आएगा. आप लाइट बंद कर दोगे, आप अब ये देखिए ये लाइट है, यदि ये जलेगी तो कितना हीट आता है, इसका बहुत जम के हीट आता है. आप 10 मिनट खड़े रहने में आपको पसीना आ जाएगा. बहुत ज्यादा इसमें लाइट हीटिंग होता है. अब बिजली का बिल भी आता है. हाँ, वो कई बार अलग चीजें प्रोग्राम में चलाना पड़ता है, वो अलग चीजें, लेकिन फिर भी मतलब इट इज नॉट दैट गुड फॉर द तो हमारे को हीट का लोड भी कम होता है बिजली जलाने से. ऑक्यूपेंट सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट. विद द नेचुरल लाइफ यू आर मोर कंफर्टेबल, और विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंट्स आर देयर, तो वो तो है ही. तो उसमें विंडोज आल्सो प्रोवाइड विजुअल रिलीफ. विंडोज के पास से बैठने से एक विजुअल रिलीफ भी मिलता है. बाहर देखने से आपको नेचर मिलता है, या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है. सो इट्स ए कॉन्टैक्ट विद द नेचर, so that you are having a contact with it. So daylighting is important. ये एक sum up किया है मैंने. Salient features हैं ये. These are the salient features of the solar passive effective thing. The daylighting zone, the window design consideration. हमने windows के ऊपर बहुत बोला है. Penetrations, window glazing, जो भी आप word use करें. Effective apertures के ऊपर हमने बोला है.
स्ट्रक्चर्स के ऊपर लाइट बाय कंसीडरिंग व्हाट इज सीन from the various potential window orientations with proportion of the sky is seen from the typical task location of the room. What are the exterior objects and the glare sources? If your building design goes to shade in a neighboring building or the landscape feature that is independent of daylight or solar. ये questions के हमको जवाब चाहिए होते हैं. Now light shelves क्या होती है? देखिए light shelves को मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ. ये देखिए लाइट शेल्फ्स, ये देखिए शेल्फिंग मीन्स जैसे आला बना दिया उसका. ये देखिए विंडो को बीच में से पार्ट कर दिया. अब उससे क्या फायदा हुआ कि लाइट यहाँ से आई और काफी पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला गया, तो ये पूरे रूम में आ गया. अब ये इतना नहीं होता तो सिर्फ इतना पोर्शन ज्यादा इल्यूमिनेट होता, यहाँ लाइटिंग कम होती है और नीचे भी लाइटिंग कम होती है. अब ये यहाँ जाने से डिफ्यूज लाइट पूरे यहाँ से रूम में आ जाएगी. और इफेक्टिव, ये मैंने आपको अभी बताया इसका. लाइट शेल्फ इज इफेक्टिव, ये मैंने आपको अभी बताया इसका. लाइट शेल्फ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइट रिफ्लेक्टिंग overhang placed on eye level with a transom window placed above it. The on solution orientation improves daylight shading near the window, helps reduce window glare. Exterior shelves devices, तो ये एक इसके बारे में हो गया. ये कल भी हमने आपको बताया था. और ये एक लाइट शेल्फ्स का, ये कुछ देखिए कितने सुंदर इन्होंने बनाया है. शेल्फिंग है ये लाइट में. ये देखिए कितने सुंदर इन्होंने बनाया है. शेल्फिंग है ये लाइट में. यहाँ से थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली. सर जैसे भी अभी जो नई नई कॉलोनी जो बन रही है और जो बिल्डर्स, क्योंकि ये लोग भी हेल्प ले रहे हैं इंजीनियर्स की, तो क्या इस टाइप की टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं कर रहे हैं मैडम? मैं कर रहा है, मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये लोग. जैसे थर्मल चिमनी तो बहुत ज्यादा यूज होती है. मैं एक घर में रहता था कि अभी 10 साल पहले दूसरे की रह के घर था. उसपे चिमनी बनी हुई थी, उसको खोलो तो बड़ी अच्छी हवा आती थी उसमें. एक डक्ट बनी हुई थी पूरी घर के, जो मेरा ड्राइंग रूम था उसके पास में एक लंबी डक्ट ऊपर छत तक ओपन थी. वो करीब 2 बाय 2 फुट की वो डक्ट थी. तो वो इट वाज थर्मल चिमनी ओनली फॉर यूज फॉर द गुड वेंटिलेशन. उसको जैसे दरवाजा लगा, दरवाजा खोल दो, फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर वहां से छत से पूरी आती थी. तो ये बिल्कुल यूज कर रहे हैं लोग. मैं 100% ये इस तरह का कॉन्सेप्ट पूरा यूज हो रहा है आजकल. मैं देखा हूँ, जैसे मैं अभी शक्ति नगर में एक हमारे विजिटर, एक हमारे साथी प्रोफेसर उनके यहाँ गया था. उनके ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम का पूरा वॉल ग्लास का था, कंप्लीट वॉल. मैंने कहा ये चोर इसको तोड़ेगा तो नहीं. मुझे क्या, उस समय मुझे नहीं पड़ा था. मैंने नहीं, इतना मोटा ग्लास था वो, कोई क्या तोड़ेगा कोई उसको. आजकल तो ये दे यूजिंग पेनिट्रेशंस. आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाइए, आपको एक पूरा जो उनका वॉल है वो पूरा ग्लास का मिलेगा. और पूरा कर्टन, वॉल टू वॉल कर्टन्स रहते हैं, थिक कर्टन्स. तो ये यूज कर रहे हैं, ग्लास साउथ फेसिंग ग्लास कर्टन्स ये यूज हो रहे हैं, लगातार यूज हो रहे हैं. और सारी चीजें जैसे कलर होते हैं जो बिल्डिंग पर जो व्हाइट वॉश किया जाता है, उसमें तो ये सारी चीजें जो जैसे आप बता रहे थे. हाँ, ऊपर छत पे अपन कोटिंग कर लेते हैं, तो छत पे भी कोटिंग अपन वो हीट की इंसुलेशन कोटिंग करते हैं, उससे अपने को समर में काफी टेम्परेचर ड्रॉप्स मिलते हैं. अच्छा, छत पे पानी भरने का रिवाज तो शायद मेरे ख्याल पहले भी था. गर्मी के समय में छत को वेंटी बंद करके और पानी भर देते, जिससे ठंडा रहता था. आज मैं वही सोलर पॉन्ड के रूप में मैं वही आपको बताया था. बहुत सी पुरानी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं. जैसे बताया मैं, रोशनदान छत के पास खिड़कियां, तो वो आजकल देख रहा हूँ कि मैं हो रही है मैडम. वो पुरानी चीज जो है वो एक अच्छे यंग आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना चाहिए जो आज के जमाने का हो, तो वो अच्छे से काम करेगा. क्योंकि पुराने जमाने के आर्किटेक्ट तो वो पता नहीं कौन सा डिजाइन का क्वेश्चन यूज करें. नहीं, ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा उतना आपका मॉडर्न हाउस होगा. क्योंकि अब ये चीजें बिल्कुल कंसर्न बन गई है. प्राइमरी सिस्टम में ज्यादातर देखा है तो ये सारी चीजों से दूर रहता है. फ्लैट सिस्टम में ना तो रोशनी सही से पूरी मिल पाती है उनको, एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज्यादा वो लोग. बनाते हैं जो भी, तो उनको